Busy travelers. This is Mayur. This is Varsha. And we are in Hoi An. Hoi An! We are just landed at Da Nang and this is our last destination of Vietnam trip. 7 दिन के सफ़र के बाद हो ची मिन और हनोई कवर करने के बाद अब हम आए हैं दा नंग में और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं टैक्सी लेके होय एन में. 30 किलोमीटर्स ड्राइव एंड विल बी इन होय एन. होटल में अपना लगेज ड्रॉप करके वी हैव कम टू ईट समथिंग. इट्स अराउंड 12 midnight. But let me show you the room. We are staying at a beach property. Basically, it's a beach view property. Beach पर नहीं है. Beautiful room and the view from this room is what we are staying here for. Good morning guys. This is our first day in Hoi An और हम लोग आए हैं Quiet Day beach पर. Just right opposite our hotel. This place is really beautiful. And आज 31st है. 31st है. Party is definitely on. मैं थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि मैं काउंट भूल गया हूँ. That's a good thing कि आपको याद नहीं रह रहा है कि कौन सा दिन है. बहुत कुछ है होय एन में करने के लिए 2 दिन के हिसाब से. हम लोग को लग रहा है हम लोग को डेज कम पड़ने वाले हैं. अब वो हमें हर जगह जाके लगता है. But yes, whole day ahead of us. Let's go and explore Hoi An. Yeah! This is the feeling guys we crave for जब आप एक न्यू कंट्री न्यू सिटी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. We just love it. और शुरुआत करते हैं कुछ खाने पीने से. Come to Seoul Kitchen for lunch. This looks amazing. Pretty peach. And you can sit here without sun or like us in the sun. ऐसा क्यों लग रहा है मुझे मयूर यहाँ से जाने नहीं वाला है क्योंकि व्यू we are sitting in sun because it's below 18 degree right here. I guess what a better way to spend the last day of the year. शाम होते ही हम लोग निकल पड़े होय एन ओल्ड टाउन एक्सप्लोर करने के लिए जो यहाँ से 2-3 किलोमीटर है. एंड वी वर ऑल रेडी टू पार्टी बट होय एन टाउन इज़ सो ब्यूटीफुल. इट फील्स लाइक आप किसी मूवी के अच्छे से सेट पे आ गए हो. एवरीथिंग इज जस्ट पिक्चर परफेक्ट. देयर इज सो मच हिस्ट्री हियर. देयर इज सो मच आर्ट हियर. Just have a look guys, this place is really magical. So Hoi An means peaceful meeting place and this old town is a UNESCO World Heritage. You can easily spend 1 to 2 days here. I want to go in this boat. How much? 150. For 2? Right now we are going for a small boat ride in this Thu Bon River. अगर आप यहाँ पे आते हैं, you must have this boat ride. This is really magical. And every month, Hoi An Old Town has Full Moon Lantern Festival, which you can attend. Not just that, Hoi An was also listed as one of Vietnam's key culture-based tourist area. There's a lot here for the art lovers. We were amazed with the kind of bamboo art we saw over here. And we couldn't resist. We had to take this boogeyman to our den. After spending 3-4 hours on the street of Hoi An Old Town, this was the time to unwind, to welcome the new year party basically. Happy dancing guys, this is one of its kind. We are going to be dancing on the streets of Hoi An Old Town. Here we go.
Right now Mayur is super high, but we still want to eat something before we head home. So we just ended up at a street restaurant to have some food. Good morning guys. This is day 2 from this beautiful Hoi An town. And we are all ready. Yes, we are both all ready to go out and explore. हम लोग जा रहे हैं दनांग. Yes. Yeah. और हम लोग होय एन में भी कुछ अलग देखने जा रहे हैं. आई होप वी गेट द टिकट्स एंड वी गेट टू एंजॉय दिस. How was yesterday? Crazy night. It was one of the beautiful nights. Hoi An में bike लेना is super easy guys, just as easy as in Goa. Only thing is you have to drive right side. City to dream. आगे से लेफ्ट. ये वाला ना? हाँ. कहीं जा रहे हैं. इधर तू बराबर जा. So फिलहाल we are heading to Hoi An Old Town again और आज हमारी लिस्ट पे है Vietnamese Bamboo Circus and the Dragon Bridge Show. Let's start with first. So this Bamboo Circus is the Vietnamese art form that has received the most invitations to perform abroad with over 500 overseas shows and 2 lakh attendees in 17 countries on 4 continents. आप इसकी टिकट ऑनलाइन या फिर सेंटर में आके भी ले सकते हैं. आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. हमारे शो के लिए अभी टाइम है, सो वी थॉट लेट्स जस्ट हैव लंच एंड अनवाइंड अ लिटिल बिफोर वी गो फॉर द शो. आफ्टर लंच हम लोग जा रहे हैं जापानीज ब्रिज देखने के लिए. जस्ट 3 minutes वॉक फ्रॉम आवर प्लेस एंड दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द ब्रिज. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कव पगोडा एंड दिस वॉज बिल्ट इन 17th century बाय जापानीज businessmen assistants. The bridge is 18 meters long, connecting the Chinese quarter eastern side and with the Japanese quarter on the western side. It crosses the Tho Bon River, bringing a serene atmosphere. So obviously Hoi An and Da Nang में करने के लिए बहुत कुछ है. There is a small list which you can do in Hoi An, but this is very good place for art lovers. और हमारे पास आज ही का दिन है एक्सप्लोर करने के लिए, तो हमने सोचा let's just pick 2 good things and we want to see little and experience more. That's why we are on the streets. That's where you get to know the exact culture, the vibe of a city or a town. This is a tip guys, जब भी आप कहीं भी जा रहे हैं, go on the street, meet locals, you will have a different experience जो आपके साथ हमेशा रहेगा. This is Hanoi Bridge. This is one of the famous bridge. यहाँ पे शाम को जैम पैक ट्रैफिक रहता है लोगों का टू क्लिक पिक्चर्स. जब हम लोग हनोई में थे तो मुझे लग रहा था दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, बट आफ्टर कमिंग टू होय एन आई रियलाइज दिस इज अ लेवल अहेड. यहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगी ये प्लेस. हाँ, ऊपर नीचे दोनों फेमस प्लेस है. This is the time to enjoy the Vietnamese Bamboo Circus. This is a storytelling circus. I think I'll take ice lemon tea. Hello. Hey. You're so cute. Oh, so cute. Hello. Let's go. Apparently you can't shoot here. So basically the artists use bamboo to create performances that stretch the imagination. So this circus grabs the attention by captivating the audience with dangerous acts and skillful performances. ये आपको देख के ही समझ आएगा. गाइस, अगर आप होय एन में हैं तो प्लीज़ ये सर्कस ज़रूर अटेंड कीजिए. इट्स अ टॉप रिकमेंडेशन. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों. अभी हम जा रहे हैं दा नंग टाउन
और ये है दनंग का फेमस ड्रैगन ब्रिज. हम लोग फायर शो देखने आए हैं. दिस ब्रिज लाइज ऑन द हैन रिवर. So this fire show happens every Saturday, Sunday at 9 p.m. It's a free show. All you have to do is find a good place to see this. So for the fire show, this is all lit up, emitting fire and water displays from the dragon's mouth. There are these pretty cafes lining the bridge from where you can marvel at this majestic display. You can also choose the boat tours to watch this view. And the traffic movement is stopped during the time this show is happening. This dragon bridge is constructed in the shape of a dragon, considered a symbol of power and nobility in Vietnam. After exploring this show, we just headed for some food. Ice cream sandwich. मैं try करेंगे क्या? Okay, give I me. want mango. Okay, give me chocolate. One chocolate, one mango. It was a pretty good deal. इतने थोड़े से टाइम में हमने दनांग और होय एन दोनों ही एक्सप्लोर किए. And waking up to this beautiful beach. And न चाहते हुए we still have to head airport. Mayur in sleep mode. Hey guys. This is our last day in Hoi An, Da Nang. हम लोग ऑलरेडी एयरपोर्ट पे हैं एंड वी आर फिनिशिंग आवर वीडियो राइट हियर. आवर वियतनाम सीरीज आर एंडिंग हियर, बट डू वॉच आउट आवर वीडियो थिंग्स टू नो बिफोर यू गो टू वियतनाम. द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. डोंट मिस आउट दैट वीडियो अगर आप वियतनाम जा रहे हो. एंड वी हैड ऑसम टाइम इन वियतनाम. वी लव वियतनाम. Yeah, one of the coolest country, and Ho Chi Minh is a city to watch out, guys. It's my kind of city, man. गाइज अगर आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ गो शेयर लाइक एंड डू सब्सक्राइब. अभी भी more than 80% people have not subscribed. So please go and subscribe. It helps us grow and it's free. So yeah. So go and subscribe. Before we go, as we always say, Whatever makes your soul happy, do that.